शुक्र खुदा में रज़वी हो। न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो हर आलम की रहमत है, कोई आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, कोई आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हमें तो करनी है शहंशाह बता की रज़ा जोई। हमें तो करनी है शहंशाह बता की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा। रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा। अस्सलातु वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से हम लोगों को ये मौका मुयस्सर हुआ कि इन मुबारक रातों में आका नामदार मदनी ताजदार हज़रत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बतौर नज़र मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफ़िल में बैठ के कुछ अर्ज़ व मारूज़ कर सके। गुज़िश्ता रातों में मैंने आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु मशहूर ज़माना सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, में हिदायत पे लाखों सलाम के दो अशार पे कुछ तशरीह की और उसी के रोशनी में मैंने कुछ आप लोगों की खिदमत में पेश किया कुछ बातें। वो दो शेर पढ़ता हूँ जो 2 दिन से पढ़ रहा। I'm going to recite the 2 shares that I read over the last 2 days from the Salam of Ala Hazrat radiallahu. मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदार हरम, शहर यारे इरम ताजदार हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम. I have explained briefly the blessings and the mercy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On the first night I explained from the first share of Salam Raza the beautiful and the magnificent station and excellence that has been given to Nabi sallallahu alaihi wasallam, and the mercy and the rahmah of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. And I explained that Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam is indeed Jane Rahmat, is indeed the soul of mercy. And on the second night I explained Shahre Yare Iram, Tajdare Haram, that was last night. That indeed Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam Shahre Yare Iram hai aur Tajdare Haram hai. That the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam is the emperor of Jannat al-Firdaus, Shahre Yare Iram, यानी जन्नत के बादशाह और ताजदारे हरम और हरम के भी बादशाह और नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम. जब तक रसूल पाक शफाअत के दरवाजे खोले नहीं उस वक्त तक कोई शफाअत नहीं कर पाएगा. This I explained last night, that the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam is the emperor of Jannat, and I explained that he sallallahu alaihi wasallam is Kaaba ka Kaaba, and we'll talk about more later that there. It's a topic by itself. And I explained that the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam on the day of Qiyamah, when everybody will be in the alam of nafsi nafsi, सब नफसी नफसी के आलम में हो गए, उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों की तरफ देख के फरमाएंगे कि अना लहा अना लहा. अपने दामन में हम लोगों को छुपाएंगे. चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ. अरे तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा. एवरी थीफ हाइड्स फ्रॉम द पुलिस. हर चोर जो है पुलिस से भागता है, छुपता है. एवरी पर्सन हु इज ए क्रिमिनल हाइड्स फ्रॉम द अथॉरिटीज. मगर सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. हालात फरमाते हैं कि चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ. Do the thieves hide from the authorities or is it opposite to that?
या रसूलल्लाह आपकी शान तो निराली है, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा. That those who have made so many gunas in the world, but Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you keep them in your daman karam. You protect them still. Why? Because you are the Aka and they are your ummati. And that is why today the share that I want to discuss, or the share through which I want to speak on this Mubarak night, is Hum Gharibon ke Aka pe behad durud. हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम. हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम. Subhan Allah, upon the beloved master of us destitute ones, upon the beloved master of us destitute ones, endless benedictions. Upon the greatest treasure of us mendicants, billions of salutations. यानी आका करीम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक हम गरीबों के आका है. There is no doubt Rasul Pak सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम is the master of all of us who are destitute. दर हकीकत हम सब गरीब है, हमारे पास कुछ नहीं है, मगर हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, our master is Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. आला हजरत अदीमुल बरकत इज आला हजरत. कलम उठाते तो सुबहान अल्लाह, इश्क मुस्तफ़ा के मोतिया बिखरने लगते हैं. आला हजरत रदियल्लाहु अन्हु, when he used to pick up his pen, and whenever he picked up his pen, then the pearls of the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would start to flow. Look at what Ala Hazrat is saying. You have to, when it comes to Ala Hazrat, you have to pay special attention to what he says. खूब गौर से सुनना पड़ता है आला हजरत की बातों को, वरना आला हजरत की एक एक शेर में पूरे पूरे जो है समंदर मौजूद है. Entire oceans are in the kalam of Ala Hazrat, one misra of Ala Hazrat radiyallahu anhu. Ala Hazrat is saying कि हम गरीबों के आका, हम गरीबों के आका. गरीब ही है जिसके कोई आका होता है, गरीब ही है जिसका आका होता है. जो शख्स अपने आप को गरीब नहीं समझता वो किसी को अपने ऊपर नहीं समझता, वो समझता है कि मैं ही बड़ा हूं. मगर हम गरीब है, मगर हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद. यानी Allah has given us such an आका that upon him may there be countless benedictions, countless durood on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now look, इधर इस मिसरे में आला फरमारे गरीब. हजरत तवज्जो ये इस बात पे, पहले मिसरा में, इन द फर्स्ट मिसरा, आला हजरत इज सेइंग हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद. और फिर दूसरे मिसरे में क्या फरमाते, हम फकीरों के सरवत. गरीब, पुअर, मेंडिकेंट, हेल्पलेस, नीडी, आका, मास्टर, सरदार, इमाम, बादशाह, और फकीर जिसका कोई नहीं है, उसके पास कोई दौलत नहीं. मगर आला हजरत फरमाते, उस तरफ फरमाते गरीब और आका, इस तरफ फरमाते फकीर सरवत. सरवत मीन्स दौलत. सरवत का माना है वेल्थ. सरमत का मानता बहुत कीमती चीज, ट्रेजर. आला हजरत इज सेइंग ऑन द फर्स्ट मिसरा, हम गरीबों के आका, यानी हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम. यानी हम गरीब जरूर है, फकीर जरूर है, मगर हमारे आका हमारी सरवत है. We are poor, we are needy, we don't have anything, मगर our treasure is Muhammadur Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम. हर आदमी अपने सरवत, अपने दौलत दुनिया को समझता है, मगर हम वो फकीर है कि हमारी दौलत, हमारी इज्जत, हमारी हर चीज, हमारी सरवत जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक है. इस द बिलव रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिफोर ही केम इन दिस दुनिया, इससे पहले कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर का बेअसत हो, कौन किसको पूछता था? गरीबों को कौन पूछता था? Who cared about the poor people? Who cared about those who were helpless?
कोई किसी की तरफ देखता नहीं था। औरतों की क्या हाल था? What was the condition of the women before the coming of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam? कोई उनकी तरफ देखता नहीं था, जानवरों की तरह उनकी ख्याल करते थे लोग। They used to think that women were just the property. जो चाहे करो, इधर फेंको उधर उठाओ। बट आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और औरतों को वो शान दिया, बेटा समझो जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। That maqam was given to that woman who would be dragged on the streets of Arabia and paraded like an animal. That the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam came and he said that under her feet is Jannah. In just these words, Nabi sallallahu alaihi wasallam took her from the zameen and he put her onto the asman. Just by these words. This is our Aka, hum gharibon ke Aka. Pe behad durud, hum fakiron ke sarwat pe lakho salam. Rasul Pak sallallahu ta'ala alaihi wasallam has given us that dawlat. That through the sadaqah of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam we got iman. Huzur ke sadaqe mein iman mila. Through the sadaqah of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam we even got Quran. Through the sadaqah of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam you got Ramadan. And it is through the sadaqah of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam that Allah has given us one night, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. So many ummats came, but nobody got one night that is greater than 1,000 months. किसी को नहीं मिला, मगर हमें मिला एक रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। और वो भी एक रात, ये नहीं कि पूरी जिंदगी में, हर साल एक ऐसी रात मिलती है। Every night you get, every year you get a night that is greater than 1,000 months. How did we get it? ये हमें मिला कैसे? ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। This is the sadaqah of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. So who is our greatest wealth? What is our greatest treasure? हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या है? ईमान। हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या है? ईमान। मगर वो ईमान दरअसल क्या है? अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, जान है ये। यानी ईमान is saying that he is my soul. So who is ईमान? Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। Our treasure, the gift of ईमान, the soul of ईमान, जान ईमान, जान रहमत, जान आलम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही वजह है, this is why ummati, we are very खुश नसीब that we are that गरीब उम्मत, but our master is मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम गरीब फकीर क्यों ना हो, मगर हमारे आका जो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और हजरत सैयदना शेख मुहक्किक Sheikh Abdul Haq Muhaddis Delvi radiyallahu ta'ala says that Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam ki paidaish, the milad of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the birth of Huzur sallallahu alaihi wasallam is greater than that of the entire creation. सारे आलम की पैदाइश से अफजल मुस्तफ़ा जान रहमत की पैदाइश है। सारे आलम की पैदाइश से अफजल से बेहतर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है। और यही वजह है कि अल्लाह ने उनको सारे जहां की तरफ भेजा है। दिस इज व्हाई अल्लाह सेंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू ऑल द पीपल। यू नो, सब जानते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम की तरफ आए, मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों की तरफ आए, ईसा अलैहिस्सलाम अपने कौम की तरफ आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने कौम की तरफ आए, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों की तरफ तशरीफ लाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम came towards everybody. That is why Sheikh Muhakkik, Sheikh Abdul Haq Muhaddis Delvi radhiyallahu anhu says that the arrival and the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is greater than the entire creation, than the existence of the entire creation. And thus Almighty Allah sent Rasul sallallahu alaihi wasallam towards all the people. He says that Allah did not restrict his risalat. Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam ki risalat muqayyad nahi hai.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का कोई कैद नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रसूल के रसूल है, हर जमाने के रसूल है, हर जमाने के नबी है। अल्लाह ताला has given the shan to the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, or Huzur sallallahu alaihi wasallam. Risalat is not restricted to only the humans. Huzur sallallahu alaihi wasallam's risalat, Rasul is not only the Rasul of humans like us. Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam is the Rasul of the jinnat also. Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam is the Rasul of Jibreel and Mikail and Israel and Israfil alayhi salam as well. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the Rasul of Adam alayhi salam also. He is the Rasul of Noah alayhi salam also. He is the Rasul of Musa alayhi salam also. He is the Rasul of Isa alayhi salam also. He is the Rasul of Ibrahim alayhi salam also. He is the Rasul of Hazrat Yahya alayhi salam also. He is the Rasul of Hazrat Sha'ya alayhi salam also. He is the Rasul of all the Anbiya or Rasul. Yani, look at who we are as the Ummah. Hum gharibon ke Aka. Look at how this we mendicants, look at who is our Aka. That everybody is saying he is Rasul. Yani, agar samandar ke gehraiyon mein jaake कोई किसी मछली से पूछ लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, if somebody goes into the depth of the sea and he asks who is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the fish will say mera Rasul hai. Even the fish will say he is my Rasul. If you go to the height of the mountains and you ask a mountain top who is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the mountain will say he is my Rasul. You will go to the plants and you will say दरख्तों को, शजर को, हजर को, जमादात को, नवादात को अब जाके सवाल करे that who is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they will say he is my Rasul. Yani the trees are saying he is my Rasul, the plants are saying he is my Rasul, the sky is saying he is my Rasul, the sun is saying he is my Rasul, the moon is saying he is my Rasul, the earth is saying he is my Rasul, Jannat is saying he is my Rasul, Adam alayhi salam is saying he is my Rasul, Nuh alayhi salam is saying he is my Rasul, Isa alayhi salam is saying he is my Rasul, Musa alayhi salam is saying he is my Rasul. And you go into the court of the creator of the entire creation and you say, oh my Rabb, who is Muhammad? He says Muhammadur Rasulullah. Muhammad is my Rasul. That is why Ala Hazrat, Adimul Barakat, Imam Ahl Sunnat, Mujaddid Din wa Millat, Parwana Shamir Risalat, Shah Imam Ahmad Raza Khan, Fazil Barelvi radiyallahu anhu फरमाते कि जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी. He is the Nabi of everybody. He is the Rasul of everybody. And how खुश नसीब we are as the ummati कि हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवट पे लाखों salam. What nasib, what good fortune we are as the ummah that our Aka is Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Our Aka is the most beloved of Almighty Allah. We are saying we are gharib, but Allah is saying, you know what kind of gharib you are? You have the greatest treasure. You are that faqir who has the greatest treasure. You have that you are the ummah of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Do you know? Subhanallah, Durud Pak par lijiye. محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. Allah Almighty sent one day revelation to Hazrat Musa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala ने मूसा alayhi salam पर वही नाज़िल किया कि ओ मूसा alayhi salatu wassalam, whosoever does not believe in Ahmad, I will throw him into the fire of hell. जो भी अहमद को ना माने मैं उसको जहन्नम में फेंक दूंगा, जहन्नम में डालूंगा उसको. Allah Ta'ala said to Musa alayhi salam, send this wahi, that O Musa, whosoever does not believe in Ahmad, I will enter him into hell. Musa alayhi salam कहने लगे, Ya Rabbi, oh my Rabb, who is Ahmad? Musa alayhi salam said, Ya Allah, who is Ahmad? Almighty Allah said, O Musa, I have not created any creation who is more honored than him. Hey Musa, unse baland kisi ko paida nahi kiya. O Musa, I have not created any creation that is more honorable than him in my divine court. Barga mein usse zyada izzat wala, rifat wala koi nahi hai. O Musa, there is none like him. And Almighty Allah said to Musa alayhi salam, even before creating the skies and the earth, I inscribed his name with my name.
जमीन और आसमान के पैदा करने से पहले मैंने उनके नाम मेरे नाम के साथ लिखवा दिया। I had his name written with my name and until, ओ मूसा सुनो, ओ मूसा, जब तक उनकी उम्मत जन्नत में ना जाए, ओ मूसा, until his ummah does not enter into Jannah, Jannah सब पे हराम है। Until I don't enter him into his ummah into Jannah, Jannah सब पे हराम है। जाए जब तक ना गुलाम खुल्द है सब पर हराम, जाए जब तक ना गुलाम खुल्द है सब पर हराम। ये आला हजरत की बोली है। This is the बोली of आला हजरत अजीमुल बरकत रदियल्लाहु अन्हु। आला हजरत वो फरमा रहे जो रब ने मूसा से कहा, Musa alayhi salam, to Musa alayhi salam, Allah said that, oh Musa, his ummah is that ummah that until I don't enter them into Jannah, jab tak wo Jannat mein na jaye, Jannat is haram, Jannat is forbidden unto everybody else। मेरे आला हज़रत उसी को लेते हैं कि जाए जब तक ना गुलाम खुल्द है सब पर हराम, मिल्क है तो आपका, या रसूलल्लाह जन्नत तो आपकी प्रॉपर्टी है, मिल्क है तो आपका, तुम पे करोड़ों दुरूद। और इसको यूं समझ लो भी कि जाए जब तक ना गुलाम खुल्द है सब पर हराम, जब तक बिलाल ना जाए कोई ना जा पाएगा। जाए जब तक ना गुलाम खुल्द है सब पर हराम, मिल्क है तो आपका, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, Allah is saying to Musa alayhi salam that until I do not enter your ummah, the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nobody will be able to go। Allah subhanahu wa ta'ala's Nabi Musa alayhi salam says, oh Allah, ye ummah kaun hai? Oh Allah, who is this ummah? Kitne khush nasib, who is this ummah? Almighty Allah said, they are those who praise abundantly, बहुत हमद करने वाले, बहुत हमद करने वाले। And Almighty Allah then spoke about the ummah. Allah explained the attributes, हमारी सिफत जो है अल्लाह बयान कर रहा है मूसा अलैहि सलाम को, उम्मत मुस्तफ़ा की जो सिफात है, द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे होगे, कैसे जिक्र करेंगे, कैसे अल्लाह को याद करेंगे, ये सब बताते हैं। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने एक तमन्ना जाहिर की। मूसा अलैहि सलाम से, ओ अल्लाह, मेक मी द नबी ऑफ दैट उम्मा। सुभान अल्लाह, ए अल्लाह मुझे उस उम्मत का नबी बना दे। ओ अल्लाह, मेक मी द नबी ऑफ दैट उम्मा। Almighty Allah said to Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, their Nabi will be from amongst them, unke Nabi unhi mein se ho, their Nabi will be from amongst them। He said, oh Allah, make me the ummah of that Nabi then। Allah, if you don't make me the Nabi of that ummah, if you will not make me the Nabi of that ummah, you have already chosen the Nabi of that ummah, oh Allah, make me the ummati of that ummah, make me the ummati of that Nabi, make me the ummati of that Nabi। Allah Almighty said, you are in the Pehle Zamana and they will come in the Akhiri Zamana. You are in the Pehle Zamana and they will come in the Akhiri Zamana, but I will gather all of you together in the Akhirat। I will gather all of you together in the Akhirat। यानी मूसा अलैहि सलाम की दुआ कबूल हो गई, Musa alayhi salam's dua is accepted। That is why Hazrat Sayyidina Imam Qadi Ayad radiyallahu anhu says in Shifa Sharif में Hazrat Qadi Ayad radiyallahu anhu फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said to सहाबा, क्या तुम खुश नहीं हो, क्या तुम राजी नहीं हो? Oh my companions, are you not pleased that Ibrahim Khalilullah alayhi salatu wasalam and Isa Kalimatullah alayhi salatu wasalam will be counted amongst you on the day of Qiyamah। यानी हजरत सैयदना इब्राहिम और सैयदना ईसा और बाकी दूसरे अंबिया अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे जो है तुम में गिने जाएंगे, तुम में शुमार किए जाएंगे। यानी they will be in my ummah on that day। तो कितनी बड़ी खुश नसीबी है। तो think about it for a moment कि हम गरीबों के आका, हम गरीब हैं मगर हमारे आका कैसे है कि अंबिया तमन्ना कर रहे थे आप उनकी उम्मत में हो जाए और आप उनकी उम्मत हो के क्या कदर करते हो? Do we value? Do we do what we were supposed to do? Let's each ask ourselves a question। रबीउल अव्वल का महीना है, एक हम अपने आप से पूछें, जोर से जवाब ना दें, दिल में जवाब। मैं अपने आप से पूछता हूँ, आप अपने आप से पूछिए। रबीउल अव्वल का महीना है, सुबह फजर से लेके अब तक शाम तक कितने मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़े?
How many Durood Sharif did you read on Rasulullah? How many times did you make tawbah in the court of Allah through the sadaqah of Rasul Pak Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul Pak Sallallahu Alaihi Wasallam's heart was so soft. Allahu Akbar. Gentle, we should learn to be soft-hearted. Open our hearts. Learn from the beloved Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम. दुरूद पाक पढ़ लीजिए. सैयदना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या सनदी या हबीबी या तबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्lam. We are the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are so khush naseeb that our Aqaid Alam sallallahu alaihi wasallam is the most beloved of Allah. But Sahaba Ikram जानते थे, जैसे वो जानते थे कोई नहीं जानता. They valued and they loved Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam so much. Hazrat Sayyidina Anas ibn Malik की एक रिवायत है, आप लोगों ने सुना होगा बार बार, मगर मैं फिर इस रिवायत को पेश कर रहा हूँ. I am presenting this narration again. You must have heard it many times. मैं जब भी इस रिवायत को जो है पेश करता हूँ या सुनता हूँ, मेरे दिल की कैफियत बदल जाती है वाकई में, कि हम जो है उम्मत होके हुजूर से हमें कैसी मोहब्बत करना चाहिए, जबकि हमारे आका वो है? हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, और वो बेहद दुरूद कौन भेज रहा है? हम तो भेजने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन हक़्क़हुल अज़ीम. हज़रत सय्यदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंग उहद का वाक़या बयान फरमाते हैं. अल्लाह, जिसमें सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों कितने शहीद हो गए थे. It is stated in the day of the battle of Uhud. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु says, एक बेचैनी थी पूरे मदीने में. There was a बेचैनी and uneasiness in the entire पूरा मदीने में. क्यों? क्योंकि ये ऐलान हो गया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए. It was announced, people were announcing that Rasul Pak Sallallahu Alaihi Wasallam has been made shaheed. We know the history of Uhud. I'm not going to go in detail. सब लोग परेशान थे, अहले मदीना परेशान कि सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, जबकि ये सिर्फ एक अफवाह था. It was only a rumor. But the word spread, बात फैल गई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो गई. जब ये खबर मदीने तक पहुंचा, when this news reached Medina Sharif, एक अंसारिया सहाबिया, one Ansari sahabiya left her house and she came out. अपने घर छोड़ के निकल आई. She left her house and she rushed towards the Maidan of Jang. She rushed towards where the battle was taking place. And as she was going, she passed the body of her son. Allahu Akbar. She passed the body of her brother. She passed the body of her husband. She passed the janazah of her father. She's passing all the bodies. But she was not able to recognize, पहचान नहीं पा रही थी कि मैं किससे गुजर रही, because of the halat, what the kuffar in Makkah had done. But she wasn't even worried about stopping and looking at them. People were saying to her that your father has been made shaheed, your brother has been made shaheed, your son has been made shaheed, all these people have been made, your brother has been made shaheed, father, husband, everybody has been martyred. She's not even looking, speed से चली जा रही है, गुजर रही है towards the मैदान Uhud. She could not recognize who she passed by first. जब आखिरी वाले पे पहुंचे, when she reached the last shaheed, she asked, ये कौन है? Who is this? They said to her, this is your brother, that is your father, that is your son, that is certain person. She said, ये मुझे बताइए मेरे मुस्तफा कैसे है? Tell me, how is my beloved Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahu Akbar. Father is lying in front, shaheed. Son, brother, पूरा घर. मगर उसके दिल में एक ही बात आ रही है, how is my beloved Rasul
sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. How is my Rasul sallallahu alayhi wa sallam? The beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Sahaba Ikram फरमाते हैं कि Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam आगे हैं. The beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam is in front. जैसे सुनती है दौड़ने लगती है. She starts to run towards Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam and पहुंच के आकर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को अपने हाथों में ले लेती है. She reaches Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam and she grabs hold of the Mubarak clothes of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, of the Mubarak chadar of Rasul Pak sallallahu ta'ala alaihi wasallam, and she looks at Nabi sallallahu alaihi wasallam and she says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mere maa baap aap pe qurban. Ya Rasulullah, may my parents be sacrificed. Ya Rasulullah, aap salamat hai to mujhe kisi ka fikr nahi hai. If you are well, then I don't have to worry about anybody else. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम. वो जानती थी कि उनकी दौलत क्या है. She knew what was her wealth. She knew what was her treasure. She knew it was the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. That is why she didn't care कि शोहर खत्म, वालिद खत्म, बेटा खत्म. बोले ये सब तो गए मेरे मुस्तफा तो है. Nabi sallallahu alaihi wasallam is there. What is this? It teaches us something very important, that this is the Aqidah of the Sahaba Ikram. This is their Iman, that the most valuable thing in the dunya and in the Akhirat is the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And that is why Ala Hazrat Adimul Barakat Imam Ahl Sunnat radiyallahu anh taught us this in one share. All I am telling you is only a drop in the ocean. It is only a drop in the ocean about what Ala Hazrat Adimul Barakat taught us. And in that kalam of that one share, he's telling us all this, what I told you, in one share, and much more which you cannot find out, I cannot even find out. But that Imam Ahl Sunnat, that is why he's called Imam Ishq Muhabbat. And that is why when you stand and you say, the next time, when you stand up and when you tie your hands and you say, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम, ये सब बातें याद आ जाना चाहिए फौरन कि हम कितने खुश नसीब है कि हम वो उम्मत है जिसके बारे में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह मुझे उस उम्मत का नबी बना दे. नबी नहीं तो उनकी जो है उस उम्मत, उस नबी के मुझे उम्मती बना दे. This is that ummah which Isa अलैहिस्सलाम wished to be the ummah of. This is this Nabi and that beloved of Allah, that all Hazrat Ibrahim Khalilullah and every Nabi wants to be in the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And we are fortunate that our Nabi is saying ummati, ummati. Came in this dunya, ummati, ummati. On the night of Mi'raj, as he went onto the Buraq, ummati, ummati. And when the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam is put in his Mubarak qabr, Sahaba Ikram sunte hai ki see that the labh Mubarak of Rasul Pak is moving, they place their ears and they hear the Nabi saying ummati, ummati. At every stage, Nabi is saying ummati, ummati. So why did the ummat not say Nabi, Nabi? Every moment, Nabi, Nabi. Everything we do, Nabi, Nabi. We should continue taking the name of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, because we are that ummat कि हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम. वमालिन ब्राफ सलाम अलैकुम.